So good morning students. Today we're going to start a new unit third, that is cell structure and function. And the first chapter of this unit third is cell, the basic unit of life. So today we're going to discuss about cell and how cells are very important, how do they work, what are metabolic activities, who discovered cell. Okay, so everything about cell, its various organelles present inside the cells, its functions, etc. आप लोगों ने सेल के बारे में आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, तो आपने बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ रखी होगी। एक तरह से आपका एक रिवीजन भी होगा इसमें, और कुछ नई चीज़ें भी इसमें आप पढ़ेंगे प्लस वन में। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? सो दीज आर कोऑर्डिनेटेड कंपार्टमेंट्स which collectively perform numerous functions and metabolic activities which are necessary for sustaining life and related aspects in an organism's body. That means, what is a cell? These are coordinated compartments like this. So these are coordinated compartments. Okay. So all of these cells, they function in a coordinated manner. Okay. In order to perform various functions and various metabolic activities inside an individual's body to sustain life and for its survival. So these cells actually form the basic unit of life of living organism. So when it comes to living organisms, or you can say the living entities are possible only due to have these cells which perform all the functions, okay, in order to sustain life. So now we have come to know about the definition of cell: coordinated compartments which collectively perform numerous functions, जो कई सारे अलग अलग तरह के functions करते हैं जो कि जरूरी है हमारे या जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, and metabolic activities. Okay. Then जब भी हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो एक थ्योरी होती है, मीन्स जो भी कंसेप्ट है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो भी इनोवेशंस करी जाती हैं, जो भी डिस्कवरीज करी जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक फंडामेंटल डेफिनेशन या फंडामेंटल थ्योरी जो है वो रखी जाती है, वो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसी को फॉलो किया जाता है। जब तक कि कोई नई फंडामेंटल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता है या वो नई थ्योरी जो है वो नहीं आ जाती है, तब तक हम उसी को फॉलो करते हैं। लाइक सेल थ्योरी। इन द सेल थ्योरी, these two scientists, Sachledin and Sachwan, they proposed the cell theory, and in cell theory they possibly tell everything about the cell. वो सेल के बारे में सब कुछ बताते हैं इस सेल थ्योरी के अंदर कि व्हाट इज अ सेल, ओके, फॉर व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो हर एक चीज के बारे में उन्होंने इस अपनी सेल थ्योरी में यहाँ पे बताया गया है। तो दीज आर वेरियस पॉइंट्स which were given by Sachledin and Sachwan in their cell theory. So let's discuss these points. The first point of this cell theory, that the body of all living organisms is an assemblage of cells. यानी क्या बोला गया है
कि जो बॉडी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की। ओके, वो सेल्स की बनी हुई है, कि वो सेल्स आपस में असेंबल हुए हैं, और असेंबल होकर क्या बने हैं? वो सेल्स। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि एटम, फ्रॉम एटम टू molecule, molecule to cell, cell to tissue, tissue to organ, and organ system level, okay, etc. So the body of all living organisms is an assemblage of cells, or in other sense we can say that the cell constitutes the structural unit of all living organisms. Means every living entity which exists on this earth, their structural arrangement is done by these cells. Okay, then each cell, हर एक अकेला cell, each cell represents a unit of metabolic activities, because each cell has its own membranes, on cytoplasm, various organelles to perform various functions, has its own nucleus, and inside the nucleus its genetic material, which actually controls everything inside a cell. So a cell is an autonomous unit, it is a structural unit, it is an independent unit, or capable of performing various functions independently. So each cell represents a unit of metabolic activities. Cells are source of heredity units. Heredity means DNA, genetic material or genome. So cells are the source of genome, heredity unit, or DNA or RNA. Because as I told you that DNA or RNA or the genetic material, which is also known as heredity material or genome, is present inside the nucleus of a cell. New cells originate from pre-existing cells. एक पुराना सेल डिवाइड होके डिफरेंशिएट होके एक नया सेल बनाता है. ओके, सो न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. एंड डू रिमेंबर this function of a cell to give birth to a new cell after a division is only possible due to having these genome or genetic material. So it is DNA which is responsible for the cell division, okay, and differentiation. That's why these so that's why the old cells can give rise to new cells. That's why new cells originate from pre-existing cells. यानी पुराने cells नए सेल बनाते हैं. वजह है DNA. So all the individuals' activity are the outcomes of cellular activities. यानी cells काम करेंगे, cells metabolic activities करेंगे, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी किसे मिलेगी? बॉडी को, तभी बॉडी परफॉर्म कर पाएगी वेरियस फंक्शंस. ओके, सो ऑल द इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज आर आउटकम्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. जब ये काम सारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? डेथ. ओके, व्हेन सेल्स स्टॉप फंक्शनिंग collectively, when cells stop functioning collectively, okay, that condition or that situation is known as cell death, which leads to death, natural death. Cells are autonomous units, as I told you that it has its own cytoplasm, organelles, genome, so it can perform various functions independently. If so, cells are autonomous units and capable of independent existence. जैसे बैक्टीरिया is a single cell. Bacteria is a single cell, a unicellular body, but it exists on this earth. ये exist करता है इस अर्थ के ऊपर एक single cell के साथ. So we can say that a single cell is capable of independent existence. Cells are partially dependent on each other to perform body
फंक्शंस। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन लेके जाएंगे, जिससे कि पूरे बॉडी सेल्स को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे कि पूरी बॉडी को फायदा होगा। यानी पार्शियली वो एक्चुअली सेल्स आर interdependent on each other to perform various or specific functions. Okay, then another term, totipotency. Totipotency is very important term. हम इसे next year जो है +2 में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो totipotency is actually a capability or ability of cell to change into a whole new body. यानी एक सिंगल सेल से आप एक whole new parent body जो है वो बना सकते हैं। तो वो एक सेल में एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल के अंदर भी। ओके, देन प्रोटोप्लाज्म। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म, वी इंक्लूड थ्री स्ट्रक्चर्स, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके, cytoplasm, so inside the nucleus it is known as cytoplasm. Actually हम इसको जनरली पूरे के पूरे को साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली the cytoplasmic content outside the nucleus is also known as hyaloplasm. इसको hyaloplasm भी बोलते हैं, cytoplasmic content outside the nucleus, यानी ये वाला एरिया where all the organelles are present except nucleus. Okay, and एक चीज आपको और बता सकता हूँ कि जो pH, the negative logarithm of hydrogen ion, the pH of this cytoplasm is around, actually as you know that what is cytoplasm, it is a colloidal solution where various acidic basic components are present, proteins, carbohydrates, sugars, you can say vitamins, electrolytes, various things are present in that cytoplasmic content. So it's a colloidal solution, and the pH of this cytoplasm is around 6.9. So you can say that it's almost neutral. This neutral की क्या होती है? 7.0. So 6.9 यानी 6.8 to 7.0 almost neutral इसकी pH रहेगी cytoplasm की. Okay. These are some facts that Robert Hooke was first to use the term cell. Robert Brown discovered nucleus in orchid roots. Cytology is the study or the scientific study of cells. PPLO, pleuropneumonia-like organism, is the smallest cell. And what is a tissue? Tissue is a group of structurally and functionally similar cells. Okay, so this is just an introduction about this chapter, cell, the basic unit of life. Tomorrow we would come to know about prokaryotes and eukaryotic cells. Thank you.